must be aware of the theme of this year, that it's primarily what the theme has been given is animal health takes a team. As a professional, as a vet professional, we have diverse duties to perform. We have diverse areas in which we perform. And when we talk of a team, so it is the team and it's not the individualistic approach that help us to take our duties. As a vet, we are not limited ourselves only to cattle or buffalo. We have different species where we do our duties. And probably as a vet, most of you might have not exposed yourselves, for example, to wildlife. How we can treat wildlife effectively, how you can maintain their health effectively. So there are many areas. It's not only wildlife I'm talking of. Many species where we have to think of how we can work in a team for the betterment of the society, for the betterment of that particular species. As a vet, if you just look at the scenario, what we had back in 60s or 70s, we have grown a lot. At that time, competition was also less. If you are a vet, you can get job easily. And most of us think that to work as a veterinary surgeon is the only area where a veterinarian can work. So that was the psyche at that time, and it is the psyche today itself. So a lot of things have changed. I have mentioned at many platforms the market has become many fold competitive. So we have to change ourselves, change our mindset. So what the society requires from us in today's era and what possible the society will ask from us in future. So there are many areas where we vet can perform our duties for the betterment of society, for the welfare of society, for the welfare of masses. So let us work together. Let us work in a team for animal health, for animal welfare, for public health, and for the environment. So it's primarily, again I am saying, it's primarily our psyche, our thinking, in what way we think our profession should go ahead in future. Be it pharmaceutical companies, be it wildlife, be it, let's say, poultry industry, and there are different segments in poultry industry, be it dairy industry. It is not only that you open a farm and you are just providing health services, you are doing your job. No, there are many areas. Be it vaccine development,
be it the nutritional, you can say, advancements for the, you can say, feeding of animals. So there are so many areas where a veterinarian can play a role. So definitely we have to think of out of the box. We have to think of newer and newer concepts in veterinary science as a whole are coming up. If we don't update ourselves and if we don't gain knowledge, so what is going on in the world and where we are as a veterinarian, probably if we are not competitive enough, we will not be able to do. वो कहते हैं थोड़ी नॉलेज जो है वो खराब करती है. So we have to think of, as a university, our university is coming up. Veterinary college will come. Dairy science has come up. Let us think of what we need in veterinary science. Being HODs, being faculty, being students, what do we need? How we should proceed further in the college where we can provide better knowledge to the students and we can say our students are the best in the country. As far as their knowledge is concerned, their confidence is concerned, and they can walk in a society with a confidence that whatever we have gained from our institute, that is up to the best. So this is what I feel that we have to think of in different areas in any department. So it is the, again, team approach which will definitely help us to reach at a particular point, and whatever we do, it's the team approach that will help. I'll give an example. It's a long time back. So there was a zoo and we were called to investigate a disease. वो कहते हैं कि जब तक आपने किसी चीज़ को सही नहीं देखा, उसमें आप एबनॉर्मेलिटी क्या बताओगे, right? So when we went there, it was very difficult to find out the abnormal behavior. When we don't know the normal behavior, how we can tell the abnormal behavior? That means our knowledge to that particular area was limited. And it took us time also just to find out what possible we can do. As a veterinarian, probably I can only provide the health services, but when you are in a team, to find out is it the normal behavior or is it the abnormal behavior, right? So there are many things that you learn when you work in a team. So not taking much of your time, let us work together, let us update ourselves for the animal welfare, betterment of animal welfare, animal health, and overall society. Again, I wish you all a very, very happy World Veterinary Day. Thank you.
एरिया में है, और इसीलिए जो है हम सौभाग्यशाली हैं कि भी वहाँ उस ब्रीड पर काम कर रहे हैं और हमारे किसानों के पास वो है। अगर जो चीज़ किसान के पास है ना, कहते हैं कि निचले पायदान पे जो चीज़ है अवेलेबल, वो बड़ी बात है। ऊपर वाले पायदान पे तो सब कुछ है, उनकी तो बात ही नहीं है। लेकिन जो सबसे डाउन में है, जो सबसे नीचे तबका है, वहाँ पर कोई चीज़ अवेलेबल होना या रहना, वो एक अपने आप में ही बड़ी बात होती है। तो क्या है कि भी वहाँ की सेवा का आपको मौका मिलेगा कि जो किसान वर्ग है उसकी सेवा का आपको मौका मिलेगा। तो वहाँ आपने कभी भी नहीं चूकना, क्योंकि हमारे देश के प्रदेश के जितने भी जैसे मेडल्स हैं, अगर खेलों की भी बात करें, क्यों आ रहे हैं? सिर्फ इसी कारण से आ रहे हैं। जो मुर्रा, जो भैंस है, जो उसका दूध है, गाय है, जो पशुधन है हमारा, जो गांव में उनके पास पोषण है, अवेलेबल है, चाहे कितना भी गरीब परिवार हो, लेकिन उनके बच्चों के पास जो है प्योर दूध है, और वो जो दूध की जो ताकत है फिर वो आगे आती है किसी न किसी दिन। तो वहाँ से लगता है कि भी फिर यस, बिना फिर रुके, बिना ट्रेनिंग करे, अगर कहीं किसी की ना भी हो ना, तो वो भी अगर उसके जीन के अंदर है और उसके पोषण के अंदर है, दोनों मिलके ऐसा फिर कमाल करती है कि भी हमारे मेडल कभी नहीं रुकते। और उनमें जो विशेष जो रीज़न है यही है कि भी हमारे पास जो पशुधन है इतनी अच्छी, कह सकते हैं कि क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। क्योंकि जो दूध की बात अगर करें तो 40-40 लीटर तक या जो दूध है हरियाणा में जो नस्ल का, मुर्रा नस्ल का, तो वो फिर काम आते हैं। और दूसरा है कि जैसे हमारे इंटर्नी है, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी हैं और बच्चे भी हैं स्कूल से आए हुए। तो किसी भी फील्ड को स्टेट लेवल पर उजागर करना, यानी हरियाणा सरकार का भी ये मकसद है कि भी हमारा स्टेट, प्रदेश तरक्की करे। और तरक्की करने में जो चीज़ सहायक सिद्ध होती है ना, वो सबको पता होती है कि भी बेस इसका है, और बेस को जितना मजबूत किया जाए उतना कम होता है। तो हमारा जो बेस है पशुधन है, और स्टार्टिंग से मानव सभ्यता जब से स्टार्ट हुई है तब से जो पशु है मानव के साथ, कहते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया है, खेतों में काम किया है, और उससे ही जो निकल कर आती है कि भी ऐसा परिश्रम किया है कि जो इकोनॉमी है हमारी आज के दिन हरियाणा की, उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और हरियाणा सरकार किसानों के साथ जितना हो सकता है डेयरी सेक्टर में भी और अन्यथा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो एम्प्लॉयमेंट की भी जनरेट करती चली आ रही है, ताकि उनको मिले किसानों को और वो अच्छे से अच्छा जो है बेस्ट कर सके। तीसरा बात होती है कि यहाँ जितने भी एक चीज़ की शायद स्टार्टिंग में शुरुआत हुई कि भी इसी पुलिस के एलिज नहीं है, वो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। कारण एक है, जहाँ भी हम जाते हैं बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। चाहे हैदराबाद गए, पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे मेरी हैदराबाद से है, VJR वेटनरी पैथोलॉजी, तब भी हमने वो जुड़ाव महसूस किया कि भी वेटनरियन अप्रोच नेशनल और कहते हैं इंटरनेशनल भी, जैसे डॉक्टर मोर हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कनाडा में, USA में। तो वहाँ क्या होता है कि भी वहाँ के लेवल तक भी आज के दिन बॉन्डिंग है। यहाँ जितने हमारे प्रोफेसर हैं, साथी हैं, जब 2000 में थे तब से लेकर आज तक, और जितने भी विजिट मेरी भी इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ हुई है, तो उनमें बड़ा एक मज़ा आया, शानदार रही है बॉन्डिंग। शायद किसी दूसरे फील्ड में वो बॉन्डिंग इतनी ना रहे, क्योंकि एक ही वट वृक्ष है जो बड़ा पुराना है, जो हमारा पहले HAU था और अब LUVAS के रूप में जो है वट वृक्ष है, उसी की शाखाएं और पत्ते हैं। और वो अपने आप को जुड़ा अगर महसूस करते हैं, वहाँ से पोषण अगर लेते हैं, तो बड़ा एक सुखद एहसास होता है हमेशा, और वो बॉन्डिंग जो है बरकरार रहती है। क्योंकि हम भी जब यहाँ थे और बड़ा एक टफ टाइम रहता है, 250 के लगभग पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, और वहाँ से निकल कर पास आउट होना, लेकिन बाद में लगता है कि दूसरी यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं ना, वहाँ लगता है कि HAU से आए हैं, LUVAS से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, हिसार से आए हैं। तो वाकई में फिर वो जो प्राउड कह लो उस चीज़ का, जो टीचर्स की मेहनत का, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनकी मेहनत का फिर पता लगता है बाद में कि यस कि भी वो मेहनत थी, वो हमारे वो काम आई, और हम उस पे पूर्ण रूप से निकल कर साथ में आए। और जो वेटनरी की बातें हैं शायद इसलिए भी ज़्यादा ध्यान में रहती है, क्योंकि जब HCS का इंटरव्यू था
उस टाइम भी 2 सवाल थे वेटरनरी से कि भी पहला सवाल था कि भी आपको वेटरनरी फील्ड में रहने के नाते सबसे अच्छी बात क्या लगी, तो मैंने एक ही आंसर किया था कि भी वेटरनरी सर्जन के नाते ही मेरे को मौका मिला उस गरीब शोषित वंचित वर्ग किसान वर्ग से मिलने का, उनके घर चूल्हे तक जुड़ने का, उनकी पीड़ाओं को, संवेदनाओं को, समस्याओं को क्लोजअप से जानने का। तब पता नहीं क्यों आज भी वही शब्द है, एक भी शब्द इधर उधर नहीं है, उस दिन भी नहीं था। अक्सर से वही शब्द हैं, जितने आज निकले उतने ही उस दिन निकले, और वो दिल से ही था कि भी जब एक वेटरनरी सर्जन जाता है फील्ड में, हम ना केवल पशुओं से जुड़ते हैं बल्कि वहाँ के जितने भी फार्मर्स है, किसान है, वहाँ से जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं को, संवेदनाओं को, पीड़ाओं को वो बिल्कुल क्लोजअप से जानते हैं। और फिर लगता है कि भी यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनका था कोरिलेटिव था कि भी आप क्यों इस फील्ड में आना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने वही आंसर किया था कि भी अब समस्याओं को तो जान लिया, उनकी पीड़ाओं को, समस्याओं को जान लिया, लेकिन एक लिमिटेड स्फीयर में ही हम काम कर पाते हैं डेयरी सेक्टर्स में। तो उस स्फीयर को भी बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनकी जो पीड़ाएं हैं, संवेदनाएं हैं, समस्याएं हैं, उनको और अच्छे से सोल्व कर सकें।